कैन डू ए लॉट, बट रोड ब्लॉक्स जो है उसको आपको रिमूव करना होगा, नो मैटर व्हाट, इन द नेशनल इंटरेस्ट, जस्ट बुलडोज। सो मैं समझता हूँ कि ये जो एक सफ़र था जो 2013 से 17 हमने इकट्ठे सफ़र शुरू किया, इसमें इसके लॉज को रिफॉर्म्स किया, एंड देयर ह्यूज एफर्ट। आपको सही वाज वन ऑफ द कमिश्नर्स इन द टीम, एंड यू नो आई ऑलवेज एडमायर्ड हिज his capabilities, and that's why the government decided when we came back, last year, that he should be the chairman of the board. So I think he's a well deserved. He has a proven track record of performance, but a lot needs to be done, I believe, a lot more. जहाँ तक the goal ये था कि हमारे कॉर्पोरेट लॉ भी और हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी शुड मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जब तक आप नहीं करेंगे, आपने देखा कि पिछले साल से पहले पिछले 2 साल में जब बहुत ज़्यादा टर्मोइल थे तो अबाउट $1 billion फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली वाज फ्लोन आउट, इट वाज टेकन आउट ऑफ द कंट्री, इट हैज़ रीस्टार्टेड फ्लोइंग इन, एंड एज औरंगजेब साहब सेड कि ये जो रिफॉर्म्स किए हैं, यू सी दी PDM गवर्नमेंट हैड to me one point agenda: to rescue Pakistan from default, full stop, because there were certain forces within and outside who wanted Pakistan to default, and it was a big battle of 16 months. Alhamdulillah, whenever I had a chance, I said Pakistan will not default. So uske liye jo bhi humne kiya, the structural reforms agenda is this full tenure of Prime Minister Shehbaz Sharif government. We have taken a number of decisions, and we intend to take these reforms very seriously, because Pakistan needs structural reforms in order to get rid of certain dependence on the foreign institutions. And I think we should stand up. आप चूँकि सारे corporate वर्ल्ड के लोग हैं, तो मैं कहा करता हूँ कि पाकिस्तान has liquidity crisis. It is an asset solvent country, because जब कहते हैं ना जी वो डेट ट्रैप हो गया, पाकिस्तान पता नहीं किधर चला जाएगा, मैं कहता nothing will happen, just don't worry. You predicted Pakistan will default once, twice, and dozen time in 18 months. Pakistan did not default, we proved it. So बात ये है कि पाकिस्तान has that capacity. Don't forget कि 2013 में क्या पाकिस्तान था? What was the the international recognition of Pakistan? A macroeconomically unstable country, a country to no matter which government, which political party will form the government, will declare default within 6 to 7 months. This was Pakistan, and 10 to 12 years it will take to get out of the quagmire Pakistan was. की एक मिसाल दी है, where did Pakistan reach in just 3.5 years? 24th global economy. Total macroeconomic indicators were positive. 4%, less than 4% CPI. Food inflation 2%. GDP growth 6%. Stock market best, in the South Asia. Your forex exchange reserves hit the highest record, which अभी तक नहीं टूटा. So that is Pakistan resilience. That's Pakistan. तो ये मुल्क में resilience है. जब जो लोग आपको घबराते हैं कि जी 130 बिलियन का फॉरेन डेट है, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा. पाकिस्तान हैज़ प्रूवन, टेस्टेड, सर्टिफाइड रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, ग्रेनाइट एंड ऑल दिस, $10,000 billion. So $130 billion liability is no challenge. The only thing is we have to streamline those assets. We have to make sure that all these assets are totally and properly, they are exploited and explored. So हमारी जो है ना जी ये एक नेगेटिविटी, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए. पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल. हमें पूरी तरह हमारा फोकस इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का फोकस है वो है कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दी बायलैटरल ट्रेड, और उसके साथ साथ हमें इसको मुल्क को आगे लेके जाना है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो आपने देखा कि इस दफ़ा मुझे जो रोल दिया गया, मैंने डे 1 पे डिक्लेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, फ्रॉम टुडे द कन्वेंशनल डिप्लोमेसी इज ओवर. दुनिया में अब जो है ना वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी. सो वी हैव बीन फोकसिंग ऑल आवर मिशंस अब्रॉड. पाकिस्तान फॉरेन अफेयर ऑफिस इन पाकिस्तान, वी आर फोकसिंग हाउ टू प्रमोट द फॉरेन ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड. दैट इज हमारा. अब कभी एनालाइज करें इशू है क्या. वी आर ट्विन डेफिसिट कंट्री, यस वी आर.
क्या है, एक आपका फिजिकल डेफिसिट है रुपयों में, यू कैन बोरो रुपीज एंड यू कैन हैंडल इट, बट योर एक्सटर्नल डेफिसिट विच इज करंट अकाउंट डेफिसिट दैट यू कांट प्रिंट फॉरेन करेंसी. सो उसमें दोनों चीज़ें हैंडलेबल हैं. सो आई रिमेंबर इन 2013 from the high level fiscal deficit we brought it almost curtailed by 40%. So अभी भी जो प्रोग्राम है कि हम इसको, और उसके लिए हमें रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं. अभी औरंगजेब साहब कह रहे थे कि पावर सेक्टर का रिफॉर्म, FBR रिफॉर्म्स, पाकिस्तान का पोटेंशियल रिपोर्टेडली 3-4 हज़ार बिलियन 3-4 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो वेस्ट हो रहे हैं. अगर इफ़ यू मोबिलाइज दोज रिसोर्सेज योर दिस फिजिकल डेफिसिट डिसअपीयर्स. नाउ हाउ टू डील विद द करंट अकाउंट डेफिसिट. करंट अकाउंट डेफिसिट में यू आर टुडे 8% रफली ऑफ योर GDP इन एक्सपोर्ट्स. ना कोई एमर्जिंग मार्केट आप कभी नहीं बनेंगे. मुझे कोई बता दे कि जी फलां एमर्जिंग मार्केट दुनिया में वो 12 से 15% टू GDP से कम उनकी एक्सपोर्ट्स हैं. सो इफ़ यू टेक इट टू 12%, which means 48 billion to 50 billion, we are in business. We don't need any foreign, dependence on foreign institutions. So we have to work towards that direction. We have to increase our exports. उसमें IT का बहुत बड़ा potential है. उसमें हमारा जो focus होना चाहिए वो non-traditional जो items हैं, जो हमारे area जो हमने explore ही नहीं as a country कर सके. तो exports को बढ़ाना और इसको इन दोनों deficits को manage करना is the main agenda of Prime Minister Shahbaz Sharif government. And alhamdulillah, we are all as a team working to get these things done. अभी fish का जिक्र किया, your global वो जो है आपके long term issue के ऊपर उन्होंने एक नॉच ऊपर किया है. I'm sure inshallah in times to come it will go better. Your policy rate has gone down already from 22 to 19.5. So things are, your inflation has gone from 30s से कम आके अभी करीबन close to 12%. So your things are moving. The prolonged inflationary pressures have receded, and things are improving with the actions of the government. So hopefully, I think it should not take too long. But I remember Fitch projecting Pakistan in April last year, 2023, that it will in May 2023 Pakistan will default by 30th of June. So रीज़न कि उस वक्त हमारे पास 3.7 बिलियन के स्टेट बैंक में रिजर्व थे और इतनी रफली हमारी पेमेंट थी अगले मई और जून में. सो दे वर राइट इन नंबर क्रंचिंग, बट वी had beaten them by our actions. And Pakistan not only did not default, but also had very improved results, and the current account deficit was brought down from the high 20s to $2.4 billion last year. तो पाकिस्तान में ये सारी जो पोटेंशियल्स हैं ये सारी की सारी हमें इसको स्ट्रीमलाइन करनी है. इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करना है. उसके लिए हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक्शंस ले रहे हैं. यू हैव सीन दैट इन ऑर्डर टू गिव a one window facilitation to the foreign direct investor particularly, and also the local investors, SIFC has been created. This is special investment facilitation center in which all divisions उनके नुमाइंदे उसमें मौजूद हैं ताकि पिलर टू पिलर डोर टू डोर लोगों को ना जाना पड़े. तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा फ्यूचर है उसमें हमें सब में फेथ होना चाहिए अल्लाह ताला के फजल करम से. एज ए सेड कि पाकिस्तान हैज़ लिक्विडिटी प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ यू हैव सीन इन बिजनेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ asset solvent country. I keep saying this thing. It is asset solvent country. It is up to us as Pakistanis that we should try to streamline the assets which Allah has blessed this country with. So inshallah things will certainly improve. जहाँ तक चेयरमैन साहब ने कुछ लॉज में अमेंडमेंट्स का जिक्र किया है, my support will be there in the parliament, in the finance ministry. Aurangzeb साहब will fully support you. I'm sure we'll work together to make all the necessary amendments which are required in reforming these laws, because कोई चीज़ perpetual नहीं है. There is evolution process. So जो चीज़ हमने अपना 2017 में की थी, in the next 7 years they might require मज़ीद improvements. So we should always be ready and move on. Digitization का और जो reforms की बात की चेयरमैन ने भी और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, yes, this is the roadmap of our government, and particularly it should be of SECP. तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मेरी तो बहुत लॉन्ग more than quarter of a century की association है with this institution, and it's late Dr. Tariq Hassan. I basically brought him in 1999 from World Bank. Usually it is unusual to send on secondment to your own country of origin.
तो मुझे वुल्फ हसन उस वक्त प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक, ही सेड के मिनिस्टर वी अंडरस्टैंड यू वेरी वर्कहॉलिक एंड दिस सो प्लीज टेल अस इफ वी कैन गिव यू ह्यूमन सपोर्ट. सो आई सेड के सेंड दिस, ही वाज इन द लीगल चेंबर of the World Bank. So I said, हमें दे. तो तारक हसन आए. He was one of the person who has been involved in the debt responsibility and debt limitation act में उनको involve किया, फिर मुल्क में coup हो गया. Then he became also very active and also as one of the former chairman of SCCP. Late Tariq has also contributed a lot. I must acknowledge all the chairmen, past chairmen. उसमें उन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला. और अभी भी जो इनकी SCCP का बोर्ड है, मानवी वाला साहब हैं, इनके साथी हैं, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है, जफर जाजी साहब हैं, उनके साथी हैं. तो ये सारे लोग जो है आपके अपनी कमिश्नर्स द टीम, you are one of the professional institution in the country which needs to be further strengthened in terms of reforms, in terms of its policy making, in terms of it, enabling laws, etc. But government की support जो है वो would be there inshallah. जहाँ तक इनकी मुख्तलिफ जो है इनके जो अमेंडमेंट्स हैं वो अगर ये लॉ मिनिस्ट्री से लॉ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं उनसे शेयर कर लें, ये लॉ सेक्रेटरी साहब देख लेंगे, फिर obviously Ministry of Finance will give its input and I'll make sure that in the Parliament we get those through inshallah in the minimum possible time from the National Assembly and the Senate. So it should not be difficult. Anyway, it's a very lucky day. हमारा कम से कम I'm very happy क्योंकि वो ड्रीम जब पूरी होती है तो बड़ी खुशी होती है. ये पिछले डेकेड में इसके लिए बहुत कोशिश की गई और इवेंचुअली नाउ वी आर इन ए पोजीशन कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी इनागोरेशन हो रही, अर्थ ब्रेकिंग हो रही है. तो इंशाअल्लाह I wish all of you Dili Mubarakbad to all the SCCP, from chairman to the every official of the SCCP. Inshallah, any assistance which is required from the Finance Ministry, as Aurangzeb said, they will be forthcoming, and any assistance the SCCP would require from me, either in the Parliament or otherwise, inshallah that will be forthcoming. So once again, heartfelt congratulations, Chairman Sahab, aapko, aapki team ko, sabko, और I wish you all the best. Inshallah, Pakistan has strong potential. Please have a faith. Pakistan has a strong potential, and we should live with the hope, and with the hope we should act upon. And agar hum koshish karenge, as I said, I quoted you 2013, 2017, just to show you what resilience this country and this economy has. From nowhere to 24th global economy. PricewaterhouseCoopers ne kya kaha? This country, the way it's going on, it will join within few years the G20, Global 20. Unfortunately, because of our own messing around, the political instability and whatnot, we reached a 47th economy in the next 5 years. So it's very unfortunate, and I think we should work together to bring Pakistan back in the economic committee of the nation and join G20 as soon as possible. Thank you very much. Pakistan Zindabad.